So what is AWS certification? This is most important. First we should know the AWS certification. So what is meaning? The welding inspector course provides an introduction to wide range of topics to do with welding inspection. So वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो कोर्स है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत सारा टॉपिक्स विथ वेल्डिंग इंस्पेक्शन का साथ जुड़े हुए बहुत सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स को, एंड ए मिक्सचर ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक्स। तो इसका अंदर में क्या है, AWS सर्टिफिकेशन का अंदर में CWI का अंदर में ये मिक्सचर ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन है, बहुत सारा वेल्डिंग इंस्पेक्शन का तरीका इसका अंदर में है, हाउ टू डू द वेल्डिंग इंस्पेक्शन and quality related topics, and after welding inspection how you have to justify this welding is correct or not, the quality level you can say that we will discuss in these topics. And the very important, आप CWI सर्टिफिकेशन कर लिया, आप उसका बाद आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज योर एडवांटेज। CWI certification can lead you to career that is stable, you can say stable, engaging and fulfilling on all levels from associate certification to senior level credential. So this, you have your CWI certification and you have your own degree and experience, then what will happen, आपका career boost हो सकता है, stable हो सकता है and आप fulfill कर सकते हो in your ड्रीम इन योर लेवल। सो आप फुलफिल कर सकते हो, आपका जो करियर स्टेबल हो सकता है, आप फुलफिल कर सकते हो आपका ऑल लेवल्स फ्रॉम एसोसिएट सर्टिफिकेशन टू सीनियर लेवल क्रेडेंशियल, ऑल लेवल यू कैन अचीव इन CWI सर्टिफिकेशन। सो दिस इज वेरी गुड थिंग्स, बहुत अच्छी चीज है जो करियर बूस्ट हो सकता है CWI। तो CWI सर्टिफिकेशन इन मोस्ट केसेस इफ यू गो इन abroad in any other countries, that CWI or CSWIP certification is very important. But what is important, CWI, which course is better, CWI or CSWIP? I already given one video, already uploaded one video, so you go through in my channel, so you will get the clear idea, AWS, CSWIP or CWI, which one is better. So you understand now what is AWS certification. Now we'll go for what documents need for registering the AWS exam. AWS एग्जाम के लिए रजिस्टरिंग करने के लिए क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट इज CWI फॉर्म्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। दिस इज सर्टिफाइड एसोसिएट वेल्डिंग इंस्पेक्टर फॉर्म्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये फॉर्म्स आपको मिलेगा आप AWS CWI का वेबसाइट में। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म and photo ID requirement. These three things is requirement for the CAWI, Certified Associate Welding Inspector. So you will go one by one in AWS website and you can check what is the requirement in employment verification form, qualification work experience form and the photo ID requirement. आपको चेक करना पड़ेगा एक एक फॉर्म में जाके क्या रिक्वायरमेंट है एंड फिल अप करके आपको सेंड करना पड़ेगा AWS वेबसाइट। Then second is CWI forms and required documents. CWI Certified Welding Inspector का फॉर्म क्या है, और डॉक्यूमेंट आपको विजुअल एक्यूरेसी टेस्ट करना पड़ेगा, एक एग्जाम फॉर्म है वो टेस्ट करके उसका सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म एंड द फोटो ID रिक्वायरमेंट। So these three things is common, you can see here, employment verification, qualifying work experience and photo ID requirements only added only the visual accuracy exam form। तो एक चीज ऐड हुआ है CWI फॉर्म में, विजुअल एक्यूरेट एग्जाम फॉर्म। एंड द लास्ट वन इज SCWI, दैट इज सीनियर सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर फॉर्म एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें विजुअल एक्यूरेटी एग्जाम फॉर्म एंड द सेम इज द लास्ट थ्री इज सेम, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म एंड द फोटो ID रिक्वायरमेंट, विजुअल एक्यूरेटी एग्जाम फॉर्म। सो दिस CWI एंड SCWI, इसमें क्या है विजुअल एक्यूरेटी टेस्ट चाहिए, बट CAWI में विजुअल एक्यूरेटी टेस्ट नहीं चाहिए। सो ऑल फॉर्म आपको मिल सकता है AWS वेबसाइट में एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड चेक द फॉर्म डिटेल्स
inside what is requirement, and you have to fill up the form, and then you have to send the AWS CWI head office. Then they will check the all your details. वो लोग रिव्यू करेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट सही है, then you can they will approval your CV or all this document, then you can attend the exam. So this is the second topic, what documents need for registering the AWS exam. Now level of certification, how many levels are there, कितना level है certification का, this is very important. First is Certified Associate Welding Inspector, that is called the CAWI. Certified Associate Welding Inspector, that is CAWI. Second is Certified Welding Inspector, that is called CWI. Basically, we people are doing all C from the CWI, Certified Welding Inspector. And the last one is the most senior level, Senior Certified Welding Inspector, that is SCWI. So these three courses is inside the AWS Welding Inspector course. First is Certified Associate Welding Inspector, then Certified Welding Inspector, then another is Senior Certified Welding Inspector. So समझ गया तो कितना इंस्पेक्टर का लेवल है, 3 levels are there. Now we'll go the fourth topic, AWS CWI Course Content Exam Pattern Syllabus for Exam. So this is the most important topic, so you should very careful from this topic. So let's start. Part A, you should know the fundamental. So we'll go for exam pattern. Part A. Part A is their fundamental. What will be there? Part A fundamental के अंदर में क्या रहेंगे? Closed book test 150 question will be there. 150 question रहेंगे. Closed book test means book will not be open. You will not get any books for that. So that is 150 question. This 2 hour question is there, 2 hour it will be there. 150 question closed book test covers all facets of welding process and non-destructive examination. So question will be there from the welding processes and for the NDT. So question welding NDT and welding process से आएंगे and 150 question रहेगा and 2 hour रहेगा आपको complete करने के लिए. Part B is practical. This is not same as the practical from the CSWIP exam and this one. This is different. So practical में part B में क्या रहेंगे? Hands-on test 46 question will be there. Using AWS book of specification. So they will give the book, AWS book of specification. Practical applications they will give book. And here also 2 hour hands-on test will require you to answer 46 question. 46 क्वेश्चन को आपको आंसर देना पड़ेगा क्या करके, एक्चुअल विजुअल इंस्पेक्शन टूल्स विद प्लास्टिक का आपका वेल्ड का रेप्लिकास दे दिया जाएगा एंड एक कोड बुक दे दिया जाएगा. इसमें से आपको 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन को आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दिस इज पार्ट बी प्रैक्टिकल एंड दिस इज पार्ट सी. दिस इज कॉल्ड ओपन कोड बुक. मींस you have your code, you can open that code and you can give that exam. There also how many question? 46 question. You see here the 46 question and these 2 hours open book test 46 to 60 question establishing your ability to find and comprehensive information in one of your choice of 5 welding course. So there is choice will be there. First choice will be from where we will get the question. Choose your own AWS D1 1.1 or API 1104 means 46 क्वेश्चन रहेगा. उसमें आपको चूज करना है कौन सा कोड से आपको आंसर देना है. आप चूज करोगे AWS D1.1 then they will give AWS D1.1 question. आप चूज करोगे API 1104 then they will give the separate API 1104 question. Or this is first option, this is second option, and the third option is part C is other course. Means no AWS code clinic or study material are offered. Means AWS codes and study material you have to get by own. They will not provide to you anything. Like last one is AWS D1.2, D1.5M, D15.1
ASME boiler pressure vessel code section 8 and 9. All these you can get in the option C. So you can choose AWS D1.1, you can choose API 1104, or you can choose this one. AWS D1.2, D1.5, AM D1.5. So you understand पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, पार्ट सी क्या है, पार्ट ए में कितना क्वेश्चन है, पार्ट बी में कितना क्वेश्चन है एंड कितना टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए, पार्ट सी में कितना क्वेश्चन है कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा चाहिए. सो दिस इज द three parts you have to give exam in AWS CWI. Now we will go the details in fundamentals. In details fundamentals you see subject, welding processes, percentage 10%, means in 100 if you see 10 question will be there. Heat control metallurgy 6%, 6 question will be there in 100 question if it is there 100 numbers, then 6 question 6%. Welding weld examination 9%, welding performance 9%, definition and terminology 12%, symbols welding and ND that is 10%, test method ND 8%, reports and records that is 6%, duties and responsibility 4%. So safety, destructive test, carting, brazing, soldering. So from all these things, from question will be there. In every subject से question आएगा percentage wise. वेल्डिंग प्रोसेस में 10 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हो, वेल्डिंग प्रोसेस से आएगा. सेम आप हीट कंट्रोल मेटलर्जी से 100 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आएगा हीट कंट्रोल मेटलर्जी से. तो दिस इज द परसेंटेज वाइज सब्जेक्ट डेविएशन. Now you see part B practical subject is procedure welder qualification 30%, means 100 question 30 question will be there from procedure and welder qualification. Mechanical test and properties 10%, that is 10%. Welding inspection and flaws 36%. ND is 10% and utilization and specification and drawings that is 10%. So you understand the each part have their different identification and the separating their process, how much percentage will be there, the question will be there. So part B practical. Now the part C is code book application. Subject is material and design, you can say 10% will be there. Fabrication is 30%, question will be there, and inspection is the 25%, and qualification, from qualification you get 30%. So these all these percentage will be helpful for you. पार्ट सी से मटेरियल एंड डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड क्वालिफिकेशन, ये चारों से आपको परसेंटेज वाइज 10%, 30%, 25% एंड 30% क्वेश्चन आएगा. तो पार्ट बी से प्रैक्टिकल से आपको प्रोसीड्यूर एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन से 30%, मैकेनिकल टेस्ट एंड प्रॉपर्टी 10%, एंड वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड फ्लॉज 36%, एनडी 10% एंड यूटिलाइजेशन 10%. So details में हम next एक वीडियो करेंगे how to pass the AWS exam. That is also very important video. I will upload. I will prepare first and then I will upload. Then it will be clear all these details here what is mentioned. Now what is code subject available and current exam edition? So what will be available in with you? कौन सा कोड आपका साथ अवेलेबल रहेगा? सो यू शुड नो AWS D1.1 it will be available with you, API 1104 it will be available with you, AWS D1.2, AWS D1.5, AWS D15.1, ASME section 9 and ASME section 8 division 1 and section 9 2007 edition with 2008 addenda. So these will be available with you. This 1 2 3 4 5 6 7, but they will not give any code to you. Applicant must provide own code book for exam. So you have your own code book. That agency they will not give anything to you. So this is code. This code will be available, should be available in exam. Now AWS recommends self-study examination preparatory material. So AWS recommend कर रहा है
सेल्फ स्टडी एग्जामिनेशन, आप सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेटरी एग्जाम सेल्फ स्टडी करके एग्जामिनेशन देने के लिए जो प्रिपरेटरी मटेरियल है उसका एक लिस्ट. Certification manual for welding inspector. If you go the order number CM 2000 WI 2000, all this code, whatever standard is there in API WIT, if you don't have, just give a comment to me. I will send to you the details of this code. I have the all. D1.1, D1.1M, D1.1 Code Clinic Reference Manual, API 1104 Study Guide, Welding Inspection Technology, all these things is required for the self-preparatory course. You have to know in this code what is the requirement in AWS CWI, then you will get a clear idea, clear concept for the AWS CWI exam. सब कोड आपका पास रहना चाहिए आप CWI एग्जाम देने का पहले. So this all standard is very important in AWS. Other recommendation क्या है AWS CWI का? AWS Welding Handbook Series, that is WHB all guide for the visual examination of welds, B1.11 2000, safety in welding, cutting, allied processes, metric practice guide, standard methods, specification for welding procedure, performance qualification, all these things is required. For other recommendation, we have to know this all standard. सब स्टैंडर्ड को आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम देने का पहले. एंड ये हैंडबुक सीरीज है, ऑल सीरीज यू कैन सी इन AWS CWI website. If you still not find out this order number details for this particular metric practice safety in welding, then you can just comment to me. I'll provide to you. Now you understand the course syllabus, fundamental, all these things, what is the requirement. Now we'll go for pass mark criteria. Candidates are required to earn a minimum score of 72% on each part of the exam. Part A fundamentals, Part B practical, and Part C code book. So आपको each part A में 72% चाहिए, practical में भी 72% चाहिए, and code book में भी 72% चाहिए. So each part में आपको 72% चाहिए, then you will get the pass mark. Then you will pass the exam. 72% not for all together. This is for each part. Eligibility criteria क्या है? You can get this eligibility criteria from the AWS. This is very minimum education, high school diploma. If it is high school diploma, then work experience required 2 years. If it is 8 gate, 4 years the work experience required. If it is less than 8 gate, 6 years is required. At least 8 gate with a minimum of 1 year vocational education is there, then 3 years experience. So you understand one by one what is the requirement in eligibility and how much work experience required with the minimum education. Now the CWI, the first one for CWI, Certified Associate Certified Welding Inspector. Now is Certified Welding Inspector. Minimum education is bachelor. If it is bachelor, some people are bachelor, then only 1 year welding based work experience is okay. Associate or higher degree in welding or non-related to engineering technology, then 2 years in welding based experience required. If you are an engineering technical person, then 3 years is experience required. And if you have some vocational course you have done 1 year, then minimum of 4 year welding based experience you required. If it is high school diploma, then minimum 5 years welding based work experience is required. And if you are 8 grade school, then minimum of 9 years welding based experience is required. And 8 grade less than, then minimum of 12 year welding based experience required. इसका मतलब क्या है? आपका ग्रेड जब कम होगा आपका एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए. मींस आप डिग्री इंजीनियर हो, आपका पास वेल्डिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर होने से आप AWS CWI में आप बैठ सकते हो. आप 8th पास है, आपका मिनिमम 9 इयर्स चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस वेल्डिंग बेस्ड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप AWS CWI में बैठ सकता है. सो दिस डिफरेंट इज लाइक दिस वे. If you are bachelor, then 1 year. If you are the lower grade, then the experience will be more. Experience will be more. Now we'll go for the
SCWI. This is Senior Certified Welding Inspector. This is how, what is the eligibility to qualify SCWI certification? You need minimum as a CWI for a minimum of 6 years out of the previous 8 years professional work experience. Means you should have the CWI first, Certified Welding Inspector, with a 6 years experience is required out of the previous 8 year professional experience. Means आपका पास 8 years work experience है. So in 8 years work experience के अंदर में 6 years आपका CWI का साथ वेल्डिंग बेस्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप SCWI में बैठ सकते हो, सीनियर सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर. उसका साथ कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव ए मिनिमम ऑफ 15 years वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए. उसका साथ 15 years वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. आप कहां से मिनिमम ऑफ 3 एटलीस्ट 3 एरिया. मीन दिस इज यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 का अंदर में आपका 3 एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल फॉर SCWI. So experience in the development of procedure, inspection requirement, acceptance criteria, experience in planning, control, application of base metals, experience as a welder, welding operator. So minimum of 3 experience आपको चाहिए, then आप सीनियर वेल्डिंग सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर में एग्जाम में बैठ सकते हो. So you understand now eligibility, CWI, CWI and SCWI. Now we will go for course fees. CWI, CWI and SCWI exam pricing. Before we proceed this pricing, मैं बोलना चाहता हूँ जो प्राइसिंग इधर में लिखा हुआ है एग्जाम एप्लीकेशन, दिस इज फ्रॉम द AWS CWI वेबसाइट, बट ऑलवेज यू शुड चेक, आपको ऑलवेज चेक करना पड़ेगा एजेंसी का साथ. Sometimes they give offer to you in certain nowadays it is going like this way. Sometimes they will give offer to you, not exact 1100, maybe 9,000, not exact 1355, that is for non-member, maybe it is 1,200 USD. So you will go first your agency, those are doing the certification for CWI, then they will tell the clear-cut idea for this, how much seminar fees. And it is 2 parts, one is seminar fees, another is exam fees. 2 parts में है, एग्जाम फीस अलग है, सेमिनार फीस अलग है. सो आप टोटल डिस्कस कर सकते हैं आपका एजेंसी के साथ, बट इट इज ए टिपिकल एग्जाम एप्लीकेशन एंड फीस फ्रॉम द AWS CWI. दैट इज एग्जाम एप्लीकेशन, दैट इज फॉर 1100 USD फॉर द मेंबर के लिए, एंड नॉन मेंबर के लिए है 1355 USD. Hope you understand the full video. This video is very important. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel to get the regular updates. Thanks a lot. If you still have comments, just let me know. I will explain to you.